وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، به خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، به نازم به شیران بی باک تو. خرامان و قران همه صف شکن، نظر آورن سوی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। स्ट्रीट चार्ट प्रेजेंट सच या झूठ ओनली ऑन टीवी चार, कंसेप्ट बाय HEIMA खान। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अरशद खान हाजिर है आज आपके अपने प्रोग्राम सच या झूठ की 5वीं सहमाई लेकर। जी हाँ जनाब, देखें वक्त कितनी तेजी में गुजरता है। आज हमारे जो सहमाई का जो एक टारगेट होता है वो 5वां शुरू हो चुका है। 4 टारगेट्स हम पूरे कर चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सराहा, जिसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जनाब, आपको पता ही है कि ऑलवेज वी आर कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से एक अछूते मौजू, एक करंट चीज़ आपके सामने लेकर आए जिसमें कि आप खुद चाहते हैं कि इन्वॉल्व हों, बोलें, कुछ कहें या आपको उसकी नॉलेज मिले। तो जी हाँ जनाब, ऐसे ही एक बड़े मौजू, इस वक्त सरगर्म मौजू के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का पहला प्रोग्राम, इस 5वीं सहमाई का पहला प्रोग्राम लेकर, जो कि बहुत कुछ बता रहा है। दुनिया का जोग्राफियाई नहीं बल्कि सियासी नक्शा बदल गया है, बदलने जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। कोरोना आया, ऑलमोस्ट एंड पे भी चला गया, लेकिन चीज़ें इस जो सदी की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो इस सदी के अंदर हो रही हैं। उसमें से एक ये भी है, बहुत बड़ा गर्म मौजू, अफगानिस्तान के इस करंट इशू को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो जनाब, सबसे पहले चलते हैं, मिलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन हाजिर है। सबसे पहले जिनका जिक्र करूंगा, अरशद खान का ये प्रोग्राम सच या झूठ कंप्लीट नहीं होता, एक अलग नाम है कामरान खान। उनके बगैर तो कामरान खान 5वीं सहमाई में मौजूद है आपके सामने और इंशाल्लाह इसी तरह आते जाते रहेंगे और हम आपको महसूस करते रहेंगे अपनी कोशिशों से। जी कामरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है आपके? 5वीं सहमाई में हमने कदम रख दिया और आज पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और वो पहला प्रोग्राम भी जो है बड़े दबंग तरीके का प्रोग्राम है, जो कोशिश करेंगे कि हमारे नाज़रीन इससे महसूस हों, उनको काफ़ी सारी मालूमात मिले। क्या कहते हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, बहुत शुक्रिया माइक मेरे हवाले करने का। सबसे पहले तो मैं आपको, बल्कि आप ही को नहीं, असल तो हकदार हैं वो जो सामने बैठे हुए ना, ये जी 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 ये जो सुन रहे हैं, इनको मुबारकबाद मैं दूंगा आपके अपने प्रोग्राम को सराहने के लिए, हमें ये एहसास बख्शने के लिए कि हम आपके सामने बार बार आते रहें। आपने पसंद किया, सराहा, जब भी तो आए बार बार आपके सामने। तो अरशद भाई और सामीन और नाज़रीन भी, आज सबको बहुत मुबारक हो। हमारी 5वीं सहमाई स्टार्ट हुआ चाहती ही है। तो अरशद भाई, मेरे ख्याल में मौजू आज का बहुत गर्मा गर्म है। मौजू, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं बात शुरू करूं या आप? मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्ट करूंगा और उसके बाद आपको मैं ज़रूर ज़हमत दूंगा कि पूरी तैयारी के साथ कामरान साहब हमेशा मौजूद रहते हैं आप लोगों के लिए। ये दिन रात इन्हीं जद्दोजहद में लगे होते हैं कि कहाँ से जो है प्रॉपर एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जमा की जाए, वो करते हैं
और आपके सामने ले अभी रखते हैं। जी जनाब, तो अफगानिस्तान एक ऐसा मौजू जो रोए ज़मीन पर बहुत ही मुश्किलों में पढ़ा रहा, पिछले कम से कम भी 30 साल तो हो ही गए होंगे, क्या कहते हैं जनाब? 40 साल अगर 1978 से देखा, अगर 78 से देखा जाए तो 40 साल से जो है वो काफी कुछ सहता हुआ ये जमीन का वो खित्ता जो है वो इजी रेंगता हुआ, दौड़ता हुआ, छलांगे मारता हुआ किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा है। बहुत सारी दबाव के बावजूद इस कौम ने बड़ी कोशिशें करके अपना मोरल जो है हमेशा बुलंदी किया है। तो जनाब इस पे ज़्यादा बेटर होगा कि मैं कामरान साहब को मदऊ करूं कि वो बताएंगे आपको कि थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे हम अफगानिस्तान की वजूद की, और उसके बाद जो है करंट जो सिचुएशन उसकी तरफ आएंगे। जी कामरान साहब। जी शुक्रिया अरशद भाई। ख्वातीन व हज़रात, एक बार फिर खैर मक़दम किया जाता है आपके अपने प्रोग्राम सच या झूठ में, प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, अ कंसेप्ट बाय यस एज आई ऑलवेज से वन एंड ओनली वन हाइमा खान। ख्वातीन व हज़रात, ये जो अफगानिस्तान का मामला है, इस पे बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक सरसरी तौर पे नजर डाली जाए कि ये है क्या अफगानिस्तान और ये सब कुछ जो हो रहा है, कब से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, उसकी मोटी मोटी बातें, फिर हम अपने बात को आगे लेके चलेंगे ताकि हर चीज आपको पहले से पता हो कि इस मौजू में जो बात हो रही है इसके असल ग्राउंड या जो जमीनी हकाइक है वो क्या थे। तो यादश बखैर 1978 अच्छा भाई, उस वक्त हमारा भी बचपन ही था, जाहिर सी बात है ये उम्र बचपन की कहलाती है, जब हमने सुना कि पड़ोस के मुल्क अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा इनकलाब आया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर भी एक ही वक्त में, जो कि ज़ाहिर शाह जो कि किंग रहे हैं, उनके कज़न भी थे, तो मोहम्मद दाऊद साहब की सदारत का तख्ता उलट दिया गया और एक ग्रुप आया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी और अफगानिस्तान की, और उन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया। उसके जो असल जो प्रेसिडेंट बने मोहम्मद दाऊद को हटाने के बाद नूर मोहम्मद तरकई करके उनका नाम था, उन्होंने कब्जा किया और अपनी पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट जो अकायद हैं और जो जवाबित हैं उनका इनेकाद किया। और इस्लामी जो रिवायात थी, इस्लामी जो कवानीन थे और जो बहुत सारी इस्लामी मामलात थे वो उन्होंने ख़त्म किए, जिसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के रहने वाले लोग मजहबी अकायद में बहुत रासिल अकीदा होते, उन्होंने उसको ज़्यादा नहीं सराहा बल्कि पसंद नहीं किया और वहाँ बगावत का आगाज शुरू हो गया और राइट्स शुरू हो गए, जो कि ये कम्युनिस्ट पार्टी मोहम्मद तरकई, नूर मोहम्मद तरकई जिन की जो हुकूमत थी वो उसको दबाने की पूरी कोशिश करती रही। उस अपनी हुकूमत में भी उनमें भी धड़े बनते गए और आपस में झगड़े शुरू होते गए और आपस में तकरार और ये सारी चीजें। उन्होंने जब ये हालात उनके काबू से बाहर होने लग गए तो दावत दी यूएसएसआर को, जो कि जाहिर सी बात है कि न सिर्फ अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क था बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से वो उनको सपोर्ट भी करता था इन बाय मींस ऑफ पैसा और सियासी और नजरियाती अकायद के हवाले से। यूएसएसआर ने किस्सा मुख्तसर इन 1979, ये दिसंबर की बात है, 24 दिसंबर को मुल्क में हमला किया अफगानिस्तान में और पूरे मुल्क में कब्जा कर दिया। यहां से कहानी शुरू हो गई। अब खुद शायद यूएसएसआर ने भी तारीख अफगानिस्तान की नहीं पढ़ी थी कि ये वो मुल्क है कि ना जिसने सिकंदर आजम को कबूल किया, ना ही कुबलाई खान को कबूल कर पाए और ना ही अंग्रेज को टिकने दिया वहां पर। और क्या वजह थी कि यूएसएसआर ने ये कदम क्यों उठाया वो बेहतर जानते होंगे। बहरहाल कब्जा हुआ और वहीं से बगावत शुरू हो गई। अफगानिस्तान में एक बहुत अहम बात है कि जब तक ये
इनके ऊपर कोई आके कब्जा नहीं करता, ये आपस में कबीलों की शक्ल में रहते हैं और काफी इख्तलाफात भी होते हैं और लड़ते लड़ाते भी रहते हैं आपस में, लेकिन जहां पर कोई बाहर की कुव्वत आन के इनके ऊपर बैठती है, ये मुत्तहद हो जाते हैं और मिलके उसका मुकाबला करते हैं। और यही हुआ, बहुत सारे कबाइल जो थे वो मुत्तहद हुए और उन्होंने तय किया कि इनकी हम पूरी तरह से मुखालफत करेंगे और ये इस्लामी इत्तेहाद बना। और इन लड़ने वालों को जो नाम दिया गया पूरी दुनिया से, उनको मुजाहिदीन का खिताब मिला, यानी लड़ने वाला, जहाद करने वाला, ताकत के सामने ना झुकने वाला, जुल्मात की ताकत के सामने ना झुकने वाला। ये मामला बढ़ता रहा। अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहुत सारे और इस्लामिक कंट्रीज इनका खुल के उन्होंने मदद की और किस्सा मुख्तसर ये जंग चलती रही और फिर तालिबान को कामयाबी मुजाहिदीन को कामयाबी मिली। 1988 में रशिया ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान उनके लिए एक रिश्ता हुआ नासूर बन गया है और 1989 में वो उस मुल्क को छोड़ छाड़ के चले गए और यहीं से अमेरिका ने भी खैरबाद कहा अफगानिस्तान को। और उनके इन ताकतों के जाने के बाद वहां पर आपस में जैसे हमेशा होता आया है कि बाहर वाले गए तो अंदर वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए और एक खाना जंगी का आगाज हो गया। 1989 से लेकर 1996 तक यह खाना जंगी चलती रही। इसी दौरान 1994 में एक नया नाम उभरा, खत्ता था, शहर का नाम था कंधार। कंधार में कुछ मदरसे के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको हम अरबी में तालिब कहते हैं और उनकी प्लूरल यानी उनकी जमा तालिबान कहलाती है, वो स्टूडेंट उठे। खास तौर पे 2 लड़के थे जिनमें से एक सरफहरिस्त जो नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। उन्होंने फैसला किया कि बहुत हो गया ये जंगो जदल और बहुत हो गई ये बदमाशियां, चलो मिलके हम इनका सरकोवी करते हैं। और वो 2 नौजवान उठे, कंधार से अपनी टीम बनाई, बढ़ते बढ़ते 2 साल के अंदर अंदर काबुल पे फतह हासिल हो गई। 1996 से लेकर 2001 तक इनकी हुकूमत रही। तकरीबन 6 साल इन्होंने लगातार हुकूमत की, जिस पे बहुत ज्यादा एतराज़ात भी उठते हैं और लोग तारीफें भी करते हैं, तारीफ करने वाले। 11 सितंबर 2001 में दुनिया ने एक और तमाशा होते हुए देखा। एक धमाका हुआ, बल्कि 2 धमाके हुए, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें, 2 बिल्डिंगें जड़ से उखड़ गई, 3000 लोग मारे गए और इल्जाम आया, अमेरिका सदर बुश ने इल्जाम लगाया सारा का सारा अलकायदा के ऊपर और उसके सरबराह जिनका नाम ओसामा बिन लादेन, जो कि पनाह में थे तालिबान की और तालिबान की हुकूमत में और उनके मेहमान कहलाते थे और अफगानिस्तान में रहते थे। सदर बुश ने और उनकी हुकूमत ने मुतालबा किया तालिबान से कि या तो इसको वापस करो, यानी इसको हमारे सुपुर्द करो, या फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहां तक कहा कि तुम अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इसको देश बदर कर दो और अपनी जान छुड़ाओ। तालिबान ने कहा कि ना सिर्फ ये इस्लामी शार के खिलाफ है, बल्कि हमारी जो तहजीब है, हमारी जो रिवायत है, उसके भी खिलाफ है कि हम किसी मेहमान को उसके दुश्मन के हवाले कर दें। ये हमारी पनाह में है, हमारी मेहमान नवाजी में है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें खुद भी इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और वो नुकसान उठाया अमेरिका ने यलगार की 2001 में और तालिबान को न सिर्फ हुकूमत छोड़ना पड़ी बल्कि अपने इलाके भी छोड़ के रूपोश होना पड़ा। बहुत बड़ी तबाही आई और इस 20 साल के अरसे में लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे साबित कदमी से। और एक वक्त यह आया किस्सा मुख्तसर जो आपने और हमने देखा, वो तो बनी तारीख जिसके बारे में मैंने आपको रोशनास किया। आज तालिबान तकरीबन 1 हफ्ते पहले यानी बरोज़े इतवार काबिज हो गए हैं काबुल पे और पूरे जोश व खरोश से हुकूमत का आगाज कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। मैं अपनी इस
जो तारीख का हवाला मैंने दिया और जो आपके सामने हकाइक सामने रखे, इससे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अरशद भाई, ओवर टू यू, आपके मेहमान बैठे हुए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, इतनी बेहतरीन तरीके से पूरा एक नक्शा खींचने का और टाइम को सामने दिखाने का कि किस तरह से क्या शुरू हुआ और नाज़रीन जानना चाहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अभी इसके मुतालिक इल्म ही नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। जी जनाब, तो देखा आपने कि क्या सिलसिलेकार रहा, और एक ऐसी सरजमीन जिस सरजमीन के अंदर डेफिनेटली अगर अल्लाह ताला ने वहाँ पे इस्लाम का बोलबाला रखा है तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ अल्लाह ताला ने नेमतें भी बख्शी होंगी, तो जिसकी बेस पे वो मुल्क आज भी चल रहा है। जी हाँ जनाब, तालिबान जो कि आज अफगानिस्तान का हिस्सा है और अफगानिस्तान को चला रहे हैं और चलाना शुरू किया है इन्होंने, और इनके सामने भी बहुत सारे अभी हालात आएंगे, और जिस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पे लोगों के पास वो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान या पैसा या जो कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी क्या सिचुएशन है, ये भी हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको मिलाते हैं हमारे एक मेहमान जो कि फर्स्ट इस्लामिक नेशनल पीस काउंसिल ऑफ अफगानिस्तान। फर्स्ट का वर्ड मैंने यूज़ किया क्योंकि ये 2008 में इसका वजूद हुआ और पहला इस्लामिक पीस काउंसिल था जो कि अफगानिस्तान की तरफ से इन्होंने बनाया, जिसके बानी और प्रेसिडेंट जो हैं हमारे साथ, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जो इस वक्त मौजूद हैं, मारूफ रियाल। हाय, अस्सलाम वालेकुम मारूफ रियाल, हाउ आर यू? रियाल, right. Alaikum assalam. I would like to say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello to all those people watching us, जो लोग हमारा शो देख रहा है। Thank you very much. Thank you very much. सत श्री अकाल और हम दावत कबूल करें। थैंक यू वेरी मच मारूफ। मारूफ एक जाना माना नाम है अफगानिस्तान की सियासत में, काफ़ी इनका पार्टिसिपेट रहा है, इनके फादर की तरफ से भी सियासत में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं ये, और मैं इनकी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि मारूफ इफ़ पॉसिबल we will talk in Urdu or some word you can use of Farsi also, but we will try to talk in English also because a lot of people they don't know the Urdu, but as per our format you know that TVCHAAR present such a JHOOTH only on TV CHAAR concept by HEIMA Khan। ये प्रोग्राम जो है वो प्योर उर्दू के अंदर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे दूसरे और जो लोग हैं वो भी इसको सुन सके, समझ सके, तो गाय बगाय वी आर गोइंग टू यूज इंग्लिश language also, and we are going to use some Pashto and Farsi also. So if anybody need to know that more details or anything, you guys can call us and on our phone 647-244-7695. If there is any question, you guys can call after the program because this program is live. We are very sorry, we don't want to take any call. We just trying to give you guys some better information, especially जो हमारे साथ इस वक्त मारूफ रियाल हैं, उनको जो है जितनी इनके पास मालूमात हम चाहते हैं कि वो चीज़ बताएं और हम इस पर नज़र डालें, हम तीनों साहबान मिलकर नज़र डालें कि आगे क्या होने जाएगा। तो जी मारूफ, कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट, क्या आप समझते हैं कि जो तारीख हमारे कामरान साहब ने बताई अफगानिस्तान की 1978 से लेके अब तक, राइट, सो क्या समझते हैं कि इसमें और क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, या व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ द करंट सिचुएशन अबाउट? Thank you so much for invitation, and I'm glad to be with you, and I'm very glad to talk to the South Asian community, especially Pakistani and Indian. Yes. And I try my best to speak in Hindi and Urdu.
but at the same time I would like to talk in English and a little bit Persian and Pashto also, because I'm a multicultural person and I would like to give the message to everybody. आपको मालूम है जो कामरान खान साहब बहुत अच्छा तरह एक अफगानिस्तान के सूरत हाल का तस्वीर दे दिया और उसको अंदाज में जो इनकलाब बोलता है वो इनकलाब नहीं था, मगर वहाँ खू था। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो भी कम्युनिस्ट नहीं था, थोड़ा लोग जो कम्युनिस्ट था वहाँ, इसलिए अफगानिस्तान में कम्युनिज्म का सिचुएशन कुछ बराबर नहीं था। और आप बहुत खूबी से बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया कि अफगान लोग बहुत अच्छे मुसलमान है और उसको फेथ को बहुत ख्याल रखेगा। उसके लिए सब लोग जो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ था, रशियन के ख़िलाफ़ था। रशियन आने से पहले जहाद शुरू होगा और एक इस्लामिक पार्टी था, उसका सरबरा जनाब गुलबुद्दीन हिकमतयार, उसने जहाद ऐलान किया कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़। और फिर उसके बाद जो रशिया आया, रशियन के ख़िलाफ़ भी, इन्वेजन के ख़िलाफ़ वो जहाद ऐलान किया। फिर 6 और पार्टी भी बन गया है पाकिस्तान में। और जो कामरान साहब बताया वो सब वर्ल्ड हमारा मदद किया, क्योंकि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड वो रेड आर्मी से बहुत डरता था और उसके डरने के लिए वो नेटो बनाया। मगर अफगान लोग जो ईमान के साथ और आज़ादी के शुआर के साथ, कुर्बानी के साथ, उसके साथ बहुत बहादुरी से लड़ता था और अफगानिस्तान को अकेला आज़ाद नहीं किया। वो सब रशियन का जो अकमार था वो सबको आज़ादी दी है। और अफगानिस्तान के जहाद के बरकत से ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी भी उसको मैसेज दिया और वो भी ज्वाइन किया। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, आपको मालूम है कि 2001 when the trade center in United States attacked, we still don't know who did it, but there was no Afghans at all to be involved. Even bin Laden, there is a lot of different opinion, and American scientific research explained the situation, how it could be two planes can melt all the building, the iron and stuff. It is not possible. There must be more stuff, but I'm not going through the details. This happened after this. The United States blame on bin Laden, and bin Laden was in Afghanistan because bin Laden was cooperated with the United States to support Afghan Mujahideen. When the trade center collapsed, as you mentioned, we don't need to repeat that. Then they attack Afghanistan, and the time they attack Afghanistan, I had a small interview and I asked the world that this war will be not winning by the NATO, and I know my people and I know Afghanistan, they will uprise, because it's very natural. When anybody attack any country, according to international law, according to the United Nations law, according to Islamic law, according to civil law, according to our national law, or any country, they have the right to defend themselves. That's right. Unfortunately, whatever happened, I'm not going through the details. Everybody knows about Afghanistan, the war and situation. And
after the American and NATO invaded Afghanistan, many Afghans, they knew the Afghan history, they knew this war will not go anywhere and war will not solve the problem. And then again, Engineer Gulbuddin Hekmatyar was the first person, he announced jihad against the NATO and American troops in Afghanistan. And after 2 years, Taliban regroup and they start fighting, and the fighting was guerrilla fighting, and they did not have any weapons according to the media, according to my information. Just they make bomb and they call it istishhadi, and the other people call it suicidal. Again, I'm not going to the details, but they just killed themselves and killed some Americans, killed other NATO troops. This gone and gone and gone until 2019. Then the United States decided that this war will be not ending, and it is the longest war of America in the entire world. उससे बाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप मेरे नज़र से वो जंग नहीं चाहता था, वो पीसफुल पर्सन था, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं था, आपको सबको समझ आया, वो बिजनेसमैन था, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था, उसको ह्यूमैनिटेरियन साइड पॉलिटिक्स के साइड में ज़्यादा था, और फिर कैलकुलेट किया कि अगर ये फाइटिंग, ये वॉर, झगड़ा going on and on and on, there is no way that the war will end, and there is no benefit for the United States. And the United States economy went down. Then the pandemic come, it conquered all over the world, the economy is downsizing. Okay. फिर ऐसा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्ट नेगोशिएशन तालिबान के साथ, वो स्पेशल एनवाय डॉक्टर सलमान खलीलजाद ने हायर किया. End of the story, the Kabul government, very corrupt according to international reporters and researchers, and they were not able to continue the government and make people happy and make the neighbor of Afghanistan happy and their allies happy. And although it was an invasion, but it was a golden chance for Afghanistan, first time in the entire history of Afghanistan, that billions of dollars from United States, from Japan, from Western world, from all over the world came to Afghanistan, and they couldn't use it in the right way. So then people also get apart from the government. Finally, last Sunday, July 14th, Taliban was able to enter Kabul without fighting. But before they entered to Kabul, most of the big cities and the provinces, without fighting, they surrounded to the Taliban. And since August 14th, I'm sorry, I said July 14th. Yeah. August 14th. August 14th, then August 15th was the a complete takeover of Kabul. Of Kabul. Yeah. Before they take over of Kabul, they didn't want to enter the Kabul. They want to negotiate, but unfortunately, the former president, he escaped from Afghanistan, and they took over the entire country. Only one province left, which is a small province but very mountain and geographically very difficult place. But they still negotiate if they surround it peacefully. But I hope that will be not an issue. इसलिए जब तालिबान गया था और कैप्चर किया country में, war finished. Number one, war is totally gone, which was every day 300 to 400 people killed in the war.
So this we will come back on that side also. I have just one small question here, right? Sure. As Mr. Maroof, you mentioned it very well in the beginning, right? It's like you said when the USSR was entering Afghanistan and captured the whole Afghanistan, and then after that many years they stay over there, and then they couldn't rule the whole Afghanistan. In the end of the time they said कि ये एक रास्ता हुआ जख्म है जो कि मेरे मुल्क को भी खा जाएगा, और वो कहकर इसको छोड़ा है उन्होंने. And then suddenly we saw the USSR also has got totally changed. The whole Russia was distributed in different small countries. So 7 states, the Muslim state was came out from that whole Russia, and then the same time the Armenian and all others, right? Ukraine or Armenia and all these, right? So मेरा सवाल ये बनता है यहाँ पे कि मिस्टर मारूफ, कमरान साहब आपकी इजाज़त से, और मैं अपने देखने वालों को भी इससे आगाह करना चाहूँगा कि आपने कहा कि यूएसएसआर टोटल खत्म हो गया, collapse हो गया, right? And empire was collapsed, right? So जब माजी में ऐसा एक बहुत बड़ा सीन हुआ है जब अफगानिस्तान के साथ ज़्यादती करने के बाद यूएसएसआर टोटल ख़त्म हो गया, तो आज 20 years यूएस का वहाँ पे रहना और बहुत सारी यूनाइटेड कंट्रीज़ का वहाँ पे रहना, और उसके बाद छोड़ना, वहाँ से निकलना, ये कह करके ये हमारे बस का काम नहीं है. What do you think? क्या देखते हैं आपके, क्या हो सकता है उनके साथ आगे? किसके साथ? अमेरिकन के साथ? बिल्कुल. हाँ. मैंने आपको बताया पहला कि अमेरिकन ने समझता था कि अफगानिस्तान को कब्जा करना मुश्किल है, आसान नहीं, और वार भी कोई नतीजा नहीं दे देगा. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. इसलिए अब बहुत अच्छा एनालॉजी. ओके. इसलिए अमेरिका डिसाइड कर दिया कि अफगानिस्तान से निकल जाएगा. मगर अमेरिका निकलने से पहले उसको ये चाहता था, let me talk in English. America should have set up with Taliban and government and encouraged them to peacefully resolve their problem. Although United States says it's an intra-Afghan issue, but in the intra-Afghan issue, United States was involved. The troop was there. The United States gave the money to the Kabul government. So it doesn't make any sense to me that the United States says it is their intra-Afghan negotiation, because Afghans leaders in the Kabul government, they were not capable of do peace talk, because they didn't have experience and they didn't have the capability. So the only thing Taliban demand Islamic government, and they did not want the Kabul government to give in to the Kabul government, and the Kabul government thought they have more than 300,000 soldiers, more than 100,000 militia, and a lot of money, and the world is behind them. They were really thinking that nobody can defeat us. But they forget that the Afghan government, especially those under Dr. Ashraf Ghani, he was just a person, but inside there was Shorai Nazar, call it Shorai Nazar, which is from Northern Alliance. They changed their name, but most power of the government was in the hand of them. For example, even the acting defense minister, Bismillah Khan, he was from the Shorai Nazar. And those people caused the American to be failed in Afghanistan. The first and strong reason, because they could not manage
the money to come to Afghanistan. They could not manage the power, the army, nothing. So they was not capable to. They were not capable to run the government. That's right. Okay. And they were not capable to deal with Taliban. They were not capable to deal with people. So they got apart from the people, and people under the rule of them very, very unhappy, and they want to go to Taliban because a lot of cruelties and wild action they did, they made a lot of people to join the Taliban, and the people welcome Taliban because anywhere Taliban go, they didn't kill them, they didn't fight with them, they didn't rob them, and on the other hand, government did a lot of bad things, and that is why my message to the United States is that you guys choose the wrong people in the wrong time for the wrong country. Otherwise, it was a golden opportunity for Afghanistan that you guys, the world, spent billions of dollars, but the result, very little. Any other question? So it's been like you said, like they choose the wrong decision, right? So the wrong people. I don't want to go into details. So what do you think? Like in Vietnam also they choose the wrong decision. They took the wrong decisions or what? So these are a lot of questions we have, but I don't want to go into that much detail, right? I want to go towards Kamran Sahab. And Kamran Sahab, अगर आपके पास कोई question है तो क्या आप वो question करेंगे? Then I will go my side. Your side. शुक्रिया अरशद भाई. ख़वातीन हज़रात, एक मक़ूला है अंग्रेज़ी का, coming from the horse's mouth, जिसको हम अगर उर्दू में कहें या हिंदी में तो वो बात जो कि उसी से वाबस्ता या रिलेटेड जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रही है. यानी हम इन साहब को, हमारे जो आज मेहमान हैं मारूफ साहब, इनको अपने प्रोग्राम में लेके यूं ही आए हैं कि इनका खुद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, सियासत को समझते हैं, सियासत में रहे भी हैं, खुद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान की जिसके रूह रवा हैं और बहुत कुछ समझते हैं अफगानिस्तान के हालात के बारे में. तो आइए चलें इनसे पूछते हैं बहुत सारे सवालात जो कि आप सुनना चाहेंगे. कामरान खान या अरशद खान के नाम की तरफ से नहीं, क्योंकि हमारा ताल्लुक कनाडा से है, हमारा ताल्लुक और अगर पीछे देखा जाए पाकिस्तान से है. मारूफ साहब बीइंग अफगानी सिटीजन, और आप खुद भी अफगानी हैं यकीनन कैनेडियन के साथ साथ, मैं अब आपसे ये सवाल पहला अपना पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से, यानी एक अफगानी के हिसाब से, क्या वॉर ओवर हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब पूरा अमनो अमान हो गया, कब्जा हो गया पूरी तरीके से तालिबान का? बहुत शुक्रिया कामरान साहब. अफगानिस्तान में शुरू होगा कब्जा, तालिबान का कब्जा. मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, नहीं तालिबान के साथ हूँ, नहीं गवर्नमेंट के साथ, कोई पार्टी के साथ नहीं हो. हमारा ओपिनियन जो है इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट लोग जो है वो जानता है कि बेनिफिट एक पार्टी का क्या है और डाउन साइज या उसका ज़रर क्या है. जो तालिबान आया, अभी तालिबान फेस बहुत बड़ा चैलेंजों से. नंबर 1 चैलेंज अफगानिस्तान का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, उसका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी तक कामयाब है, अभी तक कामयाब है. उन्होंने गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश नहीं किया अभी तक. गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के बाद पता लगेगा कि अफगान लोग उसके साथ क्या करेगा, पड़ोसी कंट्री उसके साथ क्या करेगा और वर्ल्ड उसके साथ क्या है. वर्ल्ड में 2 सेक्शन है, चाइना, रशिया, ईरान, एंड थोड़ा थोड़ा से इंडिया, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इंडिया चाइना में कोई
आचत दूसरी नहीं है। अदर साइड में है अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान। ये तालिबान को लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह वो गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश होगा, उस गवर्नमेंट में क्या रूल है तालिबान का और क्या रूल है इंडिपेंडेंट लोग का और क्या रोल है पॉलिटिशियन का। Okay, so it's been, sorry to cut you this, it's been Maroof, you are trying to say that कि अभी गवर्नमेंट प्रॉपरली तालिबान का बना नहीं है, it's too young, it's too early to say this कि अभी गवर्नमेंट पूरा हो गया, नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चार्ज को हैंडल कब्जे किया, चार्ज को हैंडल किया। And why they kabza, how they kabza means the other party, those who are was over there, they left, right? Because they feel, yeah, they escape or they left, right? So that's why. But my question is a little bit over here, a little bit हटके है थोड़ा सा कि अभी अफगानिस्तान के अंदर में 100% तालिबान रूल नहीं कर रहे हैं, बट तालिबान ऑलमोस्ट वो जो है उसको कंडीशन में ले लिया है कि तालिबान कैन डू द न्यू गवर्नमेंट, राइट? एंड वी डोंट नो कि वो गवर्नमेंट किसका होगा, कैसे होगा। मे बी इट्स गोइंग टू बी न्यूट्रल गवर्नमेंट, राइट? और मे बी इट्स गोइंग टू बी तालिबान गवर्नमेंट। बट ओनली वन थिंग वी नो दैट व्हिच इज दे आर सेइंग, दे सेड व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज कम्स, बट that is going to be 100% Islamic law, 100% Islamic rules, Islamic government. So means कि वो जो इस्लामी सियासत है उसको लाना चाहते हैं। एंड अभी ये तालिबान ने मुंह से बोला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कब्जा किया है थ्रू आउट वर्ल्ड से। जो सदाएं आ रही है, जो आओ बका हो रही है, या फिर जो चीख पुकार मची हुई है कि अब जो है वो वुमेन्स पे जुल्म होगा, वुमेन्स के ऊपर में ये होगा, वुमेन्स के ऊपर में वो होगा, ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या है? क्योंकि अगर किसी के मुल्क के अंदर में वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं और चाहते हैं कि वो मुल्क उस तरीके से चले, लेट्स से एग्जांपल फॉर द इन सऊदी, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं से भी कोई भी लेडी आता है, either they are European or American or Muslim or Christian, any kind of, everyone have to follow the local laws, right? They have to wear the hijab, right? In Saudi. Yeah. So Saudi, they made their rules, right? Yes. They passed their qanun and everything. That's why everyone has to respect that. The same thing here also, same thing everywhere also. Why don't they are not allowing in Afghanistan कि वहाँ पे भी जो ये रूल हो? क्या समझते हैं आप? क्या तालिबान के आने से क्या औरत की जिंदगी खराब हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल किया अरशद साहब, अरशद खान साहब। If you don't mind, I will pinpoint answer your question. It's a big question in English. Number one, Taliban did not have the government yet. Mm-hmm. The only thing they have, they finished the war and they captured the country, and there is no fighting anymore. So two things. Mm-hmm. Fighting is gone, peace returned. Okay. Which is 99.9% Afghan people want that. That's right. Plus the neighbor country also have deep worriness about the flame of war in Afghanistan. It could jump to Pakistan, to Iran, to Russia, to China. I don't want to go to details, but there was a possibility. So now, as far as I heard, it's not confirmed. The world want Taliban to be open, and
they are consulting with the world and with the Afghans. That is why they are not announcing their government. And what I heard, and as far as I know, they want a broad-based government, not only Taliban. But the leadership will be in Taliban, and definitely, as you mentioned, they want Islamic government. Yeah. Now, it depends on the Taliban leadership how they can relate themselves or grab the heart of the people of Afghanistan, and how they can fit themselves with the neighbors, how to establish diplomatic relationship, which I think they already have. They have with China, with Russia, with Iran, with Pakistan. India lately also sent a delegation about a month ago, and they spoke with the American all the time. This is, again, if the leadership is strong, if the leadership is capable, they have to work in these three categories: with nation, with neighbors, and international. And what I think, if they have a broad-based government, then allowed other people, then Taliban, then the world will respect that. But the good thing is, today I heard the United States do not recognize anymore Ghani as a president. So it's a good sign. Yes. And it's also a good sign if really Taliban negotiate with American and with the other world. That's a good sign. Yep. This is another good sign if they really negotiate with Afghans. 3 people I know already: Gulbuddin Tvchaar, Abdullah, the president of the National Peace Council of Afghanistan, and former President Karzai. They are talking to them, and they advise, take the advice of them, especially Gulbuddin Tvchaar, how to establish a government which can be recognized in the entire world. But the problem is, Ghani was very smart. He left the country and faced Taliban to this kind of situation. He wanted to defeat Taliban in this way, politically. But God knows, Taliban came to Kabul without any bloodshed, and Kabul is under their control. And the world, unfortunately, recognized Taliban, not all of the world, some people in the world, as a terrorist organization. I don't know if this capability the Taliban have to tell the world, hey, this was my country. I didn't fight in Pakistan, I didn't fight in Iran, I didn't kill anybody outside of my country. I fight for my freedom, and now I am ready to talk and negotiate with the United States, with China, with Germany, with France, with England, to establish diplomatic relationship and tell the world that we allowed, you are another question, we allowed women to work only with hijab, Islamic situation, which is their demand. And it is not only the demand of the Taliban. My mom has a hijab. My sister has it. My wife lives in Canada. She has a hijab. Hijab is not the Taliban. Hijab is Islamic law. But this is not only the hijab. Woman has to have equal right, the right of education, the right of work, freedom and freedom of speech, plus human rights. And Taliban should ensure that neighbor countries in the world that nobody will use Afghanistan soil against anybody violently. We want to be in peace. We want peace with the world. Then I think Taliban will make easier the government for themselves. Other than that, if they have a strong stand against the other countries, then they will be not succeeding. अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं मारूफ साहब, आपने जैसे अर्ज किया अभी कि गवर्नमेंट वो ये कह रही है कि हिजाब में रहें और ये सारे कुछ इस्लामी कवानीन, तो मैं ये समझता हूँ मारूफ साहब, जरा ये इस पे अपने विचार दे दीजिएगा, अपने रिमार्क्स दे दीजिएगा। ये गवर्नमेंट होती कौन है किसी को मजबूर करने के लिए कि तुम ये करो और ये ना करो? क्या कनाडा में भी ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है क्या? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
Canada, politically, culturally, religiously, economically, and scientifically, totally uncomparable with Islamic countries. Here is freedom of religion. Here is democracy. Here is religion is separate from the state. As you know, Islamic law is different. Islamic law is not only it's a religion, it is a way of life. Islam has the structure. आप क्या समझते हैं कि इस्लाम आपको या कुरान किसी जगह ये कहता है कि लोगों की जिंदगियां जीरन कर दो, उनको बोलो कि नमाज पढ़ने जा, और तूने रोजा क्यों नहीं रखा? ज़कात का तो कहा गया, लेकिन इन चीजों का तो कहीं हुक्म नहीं आया। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। तो वहां क्यों हो रहा है ये जबर? नहीं, देखो ये मैं बताऊंगा कि अगर तालिबान लोग को फ्रीडम दे देगा, स्पीच करेगा कि ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, मगर उस इस्लाम जोर में नहीं आया। इस्लाम जो है दावत है, दावत इरशाद है। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि कामरान खान को नमाज, फॉर एग्जांपल नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं उसको बताऊंगा कि भैया मुसलमान है, वो कहते हैं, मैं उसको नमाज का फलसफा बताऊंगा, मैं उसका नमाज का फायदा बताऊंगा, मैं उसका नमाज का जो सब कुछ साइंटिफिक हद तक तो सही है। एक मिनट, लेकिन आप जोर जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। तो वो तो कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। पहला कर दिया, दाढ़ी रखो, लेडीज को कहता है कि हिजाब जरूर बनाओ, ये करो। मैं ये कहता हूं कि अगर तालिबान वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, वर्ल्ड को सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करता है, तो हम लोग मुसलमान है मगर वर्ल्ड मुसलमान नहीं है। ये इस वर्ल्ड में जोश है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, एथियस्ट है, कम्युनिस्ट है, सबके साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ने मक्का गया, आपको मालूम है कि मुसलमान बहुत तोड़ा था, बहुत सबसे बहुत जमीयत जो था वो यहूद था, उसके बाद नसौरा था, उसके बाद ईसाई था, उसके बाद मुसलमान था, मगर वो मदनियत बनाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ना मदनी सोसाइटी बनाया जो वो कहता है कि ये सब मुसलमान नहीं है, मगर मैं सबको रहनुमा हूं, सब मेरा उम्मत है, सबके साथ जिंदगी किया। वो कभी मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मारूफ साहब ये बताइएगा बहुत तेजी से, एक अफगानी क्या सोच रहा है? अमेरिका, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हिस्सा कहती है इन्होंने 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन जितने भी है डॉलर फुकाए, तबाह किए और मुंह छुपा के वापिस आ गए। एक दुनिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ये वो। अफगानी क्या कहते हैं? क्या अमेरिका को डिफीट हो गई अफगानिस्तान में? सब कहता है कि अमेरिका डिफीट होगा, सब कहता है कि अमेरिका डिफीट होगा, मगर मैं ये कहता हूं कि अमेरिका अगर मिलिट्री डिफीट होगा, पॉलिटिकली डिफीट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिकल जगह है। Why? ओके, क्यों ऐसा क्यों है? नंबर 1, चाइना और रशिया और ईरान अमेरिका के अपोजिशन है या रकीब है, और अगर मैं कहता हूं कि एनिमी है, ये बहुत स्ट्रांग है। So they means America wants to make a base in Afghanistan to put the eye on that, right? The base is gone, military is gone, but they still want to have. There is 2 parts in the United States, as long as I understand. Some people say leave Afghanistan in the United States, but those are intelligent. They say no, we have to keep Afghanistan. What does it mean? It's not mean under their rule, but they have to have influence, access
relationship politically, diplomatically, culturally, economically, military, but not mean troops. So that is why the China and Russia also want to be there, but United States want that strategic hot spot to be in a good relationship with America. In my opinion, I love to have good relationship with the United States, of course, with the Western world, with the entire world, but especially with the United States, because United States, as you know, in the Western country, an Islamic country, when we had a fight with Russia, they were the country in Pakistan, they were behind us and they helped us. So we, Afghan, never forget good things. But unfortunately, I think it was the United States mistake to go there as an invader. But now, what I think, we want this America, people think they are enemy and American think Afghanistan is enemy. We want to change this. That's Leave this. We want to change this to be friend. Yeah. Not enemy, and we will cooperate with each other. This is the time to find out who is our friend and who is our enemy. But there is no any requirement or there is no any instruction, these are the enemies or what. But एक चीज़ जो मैंने इस पूरे सिचुएशन के अंदर में फाइंड आउट की वो ये कि अमेरिका लीव द कनाडा वेरी स्मूथली एंड खामोशी के साथ में delete and they give all access Taliban to take over. Another यही है. Yes. Second, and the third thing is that throughout the world कहीं पे भी ऐसा कुछ कभी हुआ है, अगर एक गवर्नमेंट भी जो उस मुल्क के ऊपर में है और वो अगर छोड़ के जाती है या उसको निकाल दिया जाता है तो उसके जो चाहने वाले हैं या उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके ऊपर में बहुत जुल्म होता है. ये थ्रू आउट वर्ल्ड में देखा है, होता है और हमेशा ही होता है कि उन लोगों को चुन चुन के मारा जाता है, खत्म किया जाता है. लेकिन तालिबान ने अभी तक ऐसा नहीं किया. That's mean कि तालिबान they know what is the requirement to build the country, right? So they are going on the right path, right? And I believe कि वो बिल्कुल आपके बात भी सही कि they are trying to connect with Western world also. Yes, right? They want. So that is the only thing which is they are thinking to how to build the country after the 40 years. इस 40 years के अंदर में तो फोर्थ जनरेशन जो है वो सामने आ गई. लेकिन एक चीज जो मैंने सोशल मीडिया पे कामरान साहब देखा कि किसी ने डाला कि अफगानी जो है वो डॉजिंग कार में बैठे हुए हैं और वो चला रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उसके ऊपर हंसना नहीं है, उसके ऊपर हंसना इसलिए नहीं है कि वो लोग जो इस 40 years आउट ऑफ अपने सिटी से, आउट ऑफ अपने घर बार से, अपने मोहल्ले से पहाड़ों में जिंदगी जिन्होंने गुजारी, वो बच्चे जो उधर पहाड़ों में पैदा हुए और वो बच्चे जिन्होंने कभी ये देखा ही नहीं और वहीं पे, क्योंकि जब बाप को मार दिया जाता था तो वो माँ जो है बच्चे को बोलती थी बेटा ये गन लो और जाओ अपने मुल्क को बचाओ, अपने मजहब को बचाओ. ठीक, तो वहां पे वो तरक्की करके वहां से बढ़कर वो जब शहर में उनके लिए एक नई जगह है. तो ये इस तरह का मीन्स बनाना जो है आई डोंट लाइक दिस थिंग और मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा करना चाहिए किसी नेशन के साथ में. यस, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेप लिया एंड इस स्टेप को आगे बढ़ाना भी चाहिए एंड डेफिनेटली वी आर हियर टू मेक प्रे फॉर देम टू दे हैव टू इम्प्रूव, दे हैव टू कम अप. And thanks for the special thanks for the Pakistan government also and Pakistan also, they helped them a lot and inshallah in future also वो उसको help जरूर करेंगे. Because किसी भी nation को regardless उसका क्या religion है, but that's the nation, एक मुल्क है, एक मुल्क की कौम है, उसको हक है आगे बढ़ने का, उसको हक है तरक्की करने का. और अगर नेबर आपका कोई है तो डेफिनेटली उसके घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, पूछोगे खैरियत है क्या, मे आई हेल्प यू और समथिंग. सो यही चीज हम सबको करना चाहिए. आखिर में जाते जाते मैं कामरान साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं और बिग ये डिस्कशंस हैं, इसको बिग इश्यू को हम इतनी आसानी से नहीं खत्म कर पाते. यहाँ पे चलते चलते आप दोनों हजरात को मैं एक चीज और आगाह करना चाहूंगा कि अब
क्या होगा? अब क्या होगा इस सेंस में कि अब क्या होगा उन लोगों का जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि उनको ये पता था कि अमेरिका यहाँ पर है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है। अब हम डिफरेंट मुल्कों ने, हम सबको पता है बहुत सारे मुल्कों ने अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब वो चीज तो नहीं रही। क्या तालिबान उस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है तालिबान ये सोचे कि यार इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन हम अगर मुल्क को बनाना है तो इनको भी थोड़ा सा साथ लेकर चलेंगे, राइट? या और हो सकता है तालिबान ये सोच रहे कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो मुल्क को, हमारे अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए थी, इनको निकाल के बाहर करो, ये भी हो सकता है। तो नाउ द बॉल इन देयर कोर्ट कि वो अब किस तरीके से अपने मुल्क को तरक्की देते हैं। और आउट ऑफ द कैनेडा, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द अफगानिस्तान, हम जो यहाँ बैठे हैं एज ए कैनेडियन या पाकिस्तानी या इंडियन या अमेरिकन या कोई भी, हमारा काम सिर्फ ये होना चाहिए कि एक नेशन को उसके पैरों पर खड़े होने के लिए सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करें किसी भी सूरत में, आइदर उसको वेल विशेस उसके बने या उसके लिए कुछ अच्छा सोचे, उसको नेगेटिवली ना लें, क्योंकि जो होना था वो हो गया। 40 इयर्स कोई कंट्री, कोई नेशन जो है इतना मतलब जंग को देखने के बाद में सर तो क्या वो अपने जिंदगी में सांस भी नहीं ले सकता है, लेकिन अब फिर वापस ही खड़े हुए। तो वी हैव टू बी टेक पॉजिटिवली एंड थैंक यू वेरी मच गाइस एंड थैंक यू वेरी मच मारूफ, यू आर हियर एंड कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन जी, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, अरशद खान बहुत अच्छा नुकात ने आपने पिन पॉइंट किया कि जो कंट्री एनिमी के साथ फाइट करेगा, जो आएगा वो इंतकाम ले लेगा। बिल्कुल, तालिबान कुछ ऐसा काम नहीं किया। वो कहते हैं जनरल एमनेस्टी सबको बख्शिश दिया, ये अच्छा काम है, मगर उसके सामने बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं कनाडा, I would like to ask the Canadian government, I am the founder and president of Islamic Peace Council of Canada and another branch, Islamic National Peace Council of Afghanistan, and I'm in contact with the country. Is you know the border are closed and Taliban just took over. There is no government. I hope in the next 2-3 days, sorry, they will announce the government, but everything, the food, the basic needs are very high prices. I would like to ask the Canadian government immediately to contact me 416-474-5090. I am ready to go to Afghanistan with Canadian relief agencies, Canadian government relief help, food, and whatever they can do. Please, Afghanistan is in a very, very bad situation right now and they need a lot of help and support. Thank you, Arshad Khan and Kamran Khan, and we will have this discussion. Anytime when you call me, I will be more than glad to participate. We had a very good discussion and thank you for both of you. Thank you. It's a big issue. It cannot be covered within a few minutes. Yeah. Because I have a lot of proposal in my mind. I have a lot of suggestions. Inshallah, to the world, to America, to Canada, is an independent Afghan, and I would like to see peace, good relationship between the nation and the government. No force, no people has to be forcefully done everything they want to. No, they have to give the choice to the people, and the responsibility of the government is to implement the law and have a good relationship with the neighbor and the world. And we also, if the Taliban guarantee that Afghanistan will not be used against any country's national interest, we request the entire world that they should not also interfere in Afghanistan national interest. Yeah. Thank you so much. Thank you very much for your participation. मैं एक दफा फिर अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, TVCHAAR present सच या झूठ only on TVCHAAR, concept by HEIMA Khan.
बड़ी ही जिद्दत के बाद मैं दोबारा ये मौजू डेफिनेटली हम उठाएंगे, आगे भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये नेशन अब जो है बनना शुरू हो रही है। और बिल्कुल बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ कैनेडियन मुस्लिम हमेशा हर किसी के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। डेफिनेटली जो सपोर्ट हमसे होगी वो डेफिनेटली करेंगे। और तमाम लोगों से भी यही गुजारिश है कि एटलीस्ट अच्छे अल्फाजों में याद रखें, मीन्स ना बनाए एंड कोशिश करें कि किसी के लिए अच्छा कर गुजरे। तो एंड में दोबारा मैं बताऊं आपको कि 5वीं सहमाई का पहला प्रोग्राम आपने देखा एक बड़ी न्यूज़ के साथ, और मैं कामरान साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर सी समरी को जो है एज यूजुअल जो हमारा रिवायत है हमारी, तो अरशद भाई बहुत शुक्रिया हस्बे साहब का, हस्बे रिवायत और जैसे मैं कहता हूँ हस्बे जायका भी। एक मुख्तसर सी समरी पेशे खिदमत है जो मैंने मारूफ साहब से आज सीखा। ऑफ कोर्स इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और सियासत को और हालात हाजरा को, अफगानिस्तान से रिलेटेड मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो बहुत चुनिंदा अल्फाज में जो मैंने सीखा वो ये कि मेरे ख्याल में इस वक्त हर आदमी बहुत मोहतात है कोई अपना तासुर देने से पहले, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है, बहुत इब्तिदा है और कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे मारूफ साहब ने भी कहा। और ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया कि अभी तो हुकूमत भी नहीं कायम की है तालिबान ने, तो हुकूमत नहीं है तो वो हुकूम कैसे चलाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि तालिबान क्या कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ अमन व अमान कब्जा करके डिसमिस किए गवर्नमेंट और अमन व अमान राइज कर दिया है। तो सूरत हाल जो अभी तक नजर आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान, देखिए तालिबान ने यकीनन 6 साल जो गुजारे 1996 से 2001 तक, एक बड़ी तादाद में दुनिया ऐसी है जो कहती है ये बात कि अमन अमान के हिसाब से होस्ट की जो काश्त थी उस पर पाबंदी लग गई थी। अमन अमान अपने इंतहाओं पे था और कुछ खराबियां भी थी जिसका लोगों ने यकीनन गाहे बगाहे जिक्र भी किया, लेकिन उम्मीद की जाती है कि तालिबान अपनी उन गलतियों से जो उन्होंने सीखी होंगी इस दौरान उससे इज्तनाब बरतेंगे। उन्होंने थोड़ा सा इशारा भी किया उसके बारे में, अभी मंगल वाले दिन जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट उठाए और इशारा किया कि मुस्तकबिल की गवर्नमेंट इस तरह से होगी और बहुत अच्छी बातें की। हम सब उम्मीद करते हैं मारूफ साहब, हम दुआ गो हैं अफगानिस्तान के लिए, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बहुत ही मुखलिस किस्म के दोस्त हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनको तरक्की दे, इस मुल्क में अमन व अमान कायम करे। मैंने जब से होश संभाला मैंने रोता हुआ इस मुल्क को आंसू बहाते हुए देखा, अब बस बहुत हो गया। अल्लाह ताला से पुरजोर आप यानी दुनिया की ताकतों से मुतालबा है और दुआ है अल्लाह ताला के हुजूर के, अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व अमान करे, तरक्की करे इस मुल्क की और इस मुल्क के लोगों को अमन व अमान नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अरशद भाई मैं इजाजत चाहूंगा अपनी इन बातों से और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ आपका यहाँ तशरीफ लाने का, और हम इस तरह के प्रोग्राम्स को आगे भी लेते चलेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर अगले वीक एक नए बहुत ही अछूते मौजू के साथ आपसे, और बताते हैं कि क्या आने जा रहा है नया। एंड चलते चलते मैं ज़रूर ये लफ्ज़ कहता जाऊंगा कि किसी को धक्का देकर गिराना बहुत आसान है, किसी को धक्का देकर गिराना बहुत आसान है, सिर्फ एक झटके की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी गिरे हुए को उठाना और संभालना, वापस से खड़ा करना, ये है मर्दों का काम। तो इसको जहन में रखिए, लेके चलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।